Good morning, students. As you know, in our previous class, we had discussed about some of the chemical properties of metals and non-metals. Now start with the next reaction, that is reaction of metals and non-metals with bases. In metals, generally when metals react with NaOH, NaOH is a strong base, then it releases hydrogen gases. Means when metal reacts with bases, they react and gives hydrogen gases. And in non-metals, reaction of non-metals with bases are very complexes. Complex means we are giving many conditions for the happening of this reaction. So metals when react with bases, they give hydrogen gas, and non-metals generally not react with bases, but when it reacts with bases, the reactions are very complexes. As you all know about displacement reaction, displace means hatana, the reaction in which more reactive metal displaces its less reactive metal from its salt solution, then this type of reaction is known as displacement reaction. So in the metals, we show a property of displacement reaction, means a more reactive metal when react with any other metal in its salt solution, then a metal which is more reactive, it replaces the less reactive metal. Can be easily understood by giving examples. See in the slides, when we can do the reaction of magnesium plus copper sulfate solution. ठीक है, magnesium is a metal, copper is also an metal, but when we do the reaction of magnesium and copper sulfate, so magnesium is more reactive than copper, so when it reacts each other, magnesium displaces the copper and it combines with sulfate and gives magnesium sulfate, and it releases or it displaces copper from its salt solution. ठीक है, मीन्स जब मैग्नीशियम जो होता है वो कॉपर से क्या होगा, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है. जब हम रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मैग्नीशियम जो होता है वो कॉपर से पहले आता है, तो मैग्नीशियम कॉपर से मोर रिएक्टिव है, वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है. तो जब हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें वाटर मतलब कॉपर और सल्फेट का जब हमने सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन में हमने मैग्नीशियम मेटल को डाला, तो जैसे ही रिएक्शन होगी तो रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम जो कि मोर रिएक्टिव है वो क्या करेगा, कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा और वो खुद उसकी जगह जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और उससे हमको कॉपर सल्फेट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट का सॉल्यूशन मिलेगा, और मैग्नीशियम कॉपर को हटा देगा तो बाद में कॉपर जो होगा वो अलग से उसके अंदर सॉल्यूशन के अंदर मूव करेगा, कॉपर आयंस अलग से मूव करेंगे. सो दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन व्हेन more reactive matter displaces the less reactive metal from its salt solution. इसके जैसा next example you can see Zn plus copper sulfate solution. Zinc is also more reactive than copper, so when it reacts with copper sulfate solution, it displaces copper from its salt solution and we will get zinc sulfate plus copper. Next, in same Fe plus CuSO4, Fe is more reactive than copper, so it displaces copper from its place and react with sulfate and gives iron sulfate or ferric sulfate plus copper. So this is known as the displacement reaction. So it is the property of all the metals. Now the activity series of metal. Based on the reactivity of metals, they can be arranged in the decreasing order. Means all the metal reacts because they have free electrons or free ions to react with each other. So on the basis of their reactivity speed, they can be arranged in their series, and this series is known as activity series of metal. These all metal are arranged in their decreasing order of their reactivity. Decreasing means the फर्स्ट में जो मेटल है दैट इज़ हाईली रिएक्टिव, और उसके बाद जैसे जैसे उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर डिक्रीज होता जा रहा है उसके ऑर्डर पे हमने उसको जमा रखा है. एज यू सी इन दी स्लाइड, पोटेशियम इज़ द हाईली रिएक्टिव एंड गोल्ड इज़ द लिस्ट रिएक्टिव मेटल. तो पोटेशियम, देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड,
copper, silver and gold. So this is the decreasing order of the activity series of metal. Next, what are noble metals? Some of the metals which do not react with air, water or acids, and they retain their luster. So these type of metals are known as noble metals. Now, why these metals are known as noble metal? Because like gold and platinum are two of the most unreactive stable metals. ठीक है, stable metals हैं because they are highly stable and they do not oxidize or react with other elements, and they command themselves easily, so they are known as noble metals because ये किसी के साथ में भी react नहीं करते हैं, भले वो air हो, water हो या फिर acid हो. So they are known as noble metals. It is aqua regia. डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, what is aqua regia? The aqua regia is a mixture of concentrated nitric acid and concentrated hydrochloric acid, which we will take 1 part of the nitric acid and 3 part of the hydrochloric acid. Okay, so this mixture is known as aqua regia mixture. It is generally of yellow orange color and it is a fuming liquid. All the noble metals which do not react with acid, bases and etc., they can easily dissolve by these मिक्सचर. मीन्स जितने भी मेटल्स नोबल मेटल्स है लाइक गोल्ड है, आपका प्लेटिनियम है, ये जो मेटल्स हैं और जितने भी नॉन मेटल्स हैं और जितने भी नोबल मेटल्स हैं जिसको हम इजीली किसी के साथ डिज़ोल्व नहीं कर सकते, तो वो इन एक्वा रीजा के हेल्प से हम इनको क्या कर सकते हैं, डिज़ोल्व कर सकते हैं और उनकी रिएक्शन कर सकते हैं. तो एक्वा रीजा इज़ अ मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन विच विल टेक 1 part of the nitric acid and the 3 parts of the hydrochloric acid. This is used to do or to dissolve gold and platinum like noble metals. So all the chemical and physical properties are over. Then next we are going to study about the uses of metal. You all know very well about the uses of metals. First is iron. It is used for making pins, nails, nuts, machines, construction of buildings, bridges, etc. Like aluminum, it is used for making wires, utensils, furnitures, for packaging food. Food में जैसे आपका aluminum foil होता है, medicines इस सब में हम aluminum का use करते हैं. Like copper, it is used for making wires, vessels, etc. Gold, silver and platinum, they are generally used for making jewelry, coins and medals. सोडियम को हम जनरली कॉमन साल्ट जो नमक हम यूज़ करते हैं यूँ और एज अ केमिकल रिएजेंट इन दी laboratory. Calcium, they are used for making cement and glass. So these all are the uses of metals. Now the uses of non-metals. In non-metals, first is sulfur. They are used for making sulfuric acid, salts of metals and etc. Oxygen, it is generally used and it is very useful for the living beings or the burning of fuels. Burning of fuels, जब फ्यूल बर्न होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन नीड होती है. जैसे ही आपकी ऑक्सीजन ख़त्म हुई और आपने किसी चीज़ को कवर कर रखा है तो वो क्या हो जाएगा, जो आग है वो बर्निंग है वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी. नाइट्रोजन, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग अमोनिया एंड इन फर्टिलाइजर्स में हम अमोनिया के यूज़ करते हैं. हाइड्रोजन जो होता है उसका यूज़ हम फर्टिलाइजर्स, रॉकेट्स और फॉर वेल्डिंग के लिए हम उसका यूज़ करते हैं. क्लोरीनेशन जो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो डर्टी वाटर होता है उसके जर्म्स को कील करने के लिए हम उसका यूज़ कर सकते हैं. आयोडीन इज़ यूज्ड एज अ टिंचर, एंटीसेप्टिक होता है. तो हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा कि एक रेड कलर का एक सॉल्यूशन आपको लगाया जाता है, दैट इज़ आयोडीन बिकॉज इट इज़ एंटीसेप्टिक in nature. So these all are the uses of non-metals. Now the next term is alloy. Alloy is a solid mixture of two or more metals or a mixture of metal and non-metal. Okay, alloy जो होगा वो क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा मेटल से मिलके बना होगा या फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बन सकता है. अलॉय जो होता है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग कॉइन्स, सैटेलाइट, स्टेनलेस स्टील, वुडन शेप्स एंड कास्टिंग्स, इन सब में अलॉय का यूज़ होता है. सम ऑफ द अलॉयज लाइक ड्यूरेलियम, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है. सो इट इज़ यूज्ड इन एयरक्राफ्ट, प्रेशर कुकर्स,
automobiles, etc. Naval brass is an alloy which is used for marine and engineering casting. Some of the metals like iron, sodium, and calcium, these are the essential parts of the human body. So here, this is all about alloy. So dear students, in this class we had completed our this chapter also. So please keep reading at home, stay safe and stay at home. Bye. Thank you.